Today we will be discussing the second layer of the earth, which is known as the mantle. Now, first of all, the mantle, it extends from Moho discontinuity to a depth of 2900 kilometers. Okay, so we have seen Moho discontinuity is the boundary है crust और mantle के बीच में. तो वहां से mantle शुरू होता है from Moho discontinuity. And mantle सबसे ज्यादा जो अर्थ का it occupies most of its volume and mass. ठीक है, तो सबसे जो बड़ा पोर्शन है अर्थ का वो क्या है, mantle. So it extends up to the depth of 2900 kilometers. ठीक है. Now it is the portion beyond the crust. ये भी हमें पता है, it is the second layer of the earth after the crust. So crust is the outermost. After crust we have the second layer, which is mantle. So next point, it makes more than half of Earth's volume. Okay, so around 82.54% of the Earth's volume and 66% of its mass. This point I have asked you already, that the crust and uppermost part of the mantle makes the lithosphere. Okay, now the upper portion of the mantle beneath the lithospheric mantle is called asthenosphere. The crust plus upper portion of the mantle क्या है, lithosphere. और लिथोस्फेयर के नीचे अगर आप देखोगे, अगर इतना पोर्शन आप लो तो ये क्या है, एस्थेनोस्फेयर. ये लेयर है मेंटल की ही, मेंटल का ही पार्ट है. लिथोस्फेयर के जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर. तो एक तरह से जो लिथोस्फेयर है वो किसके ऊपर है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर. और एस्थेनोस्फेयर क्या है, एक प्लास्टिक लेयर बोला जाता है इसे, जिसमें मोल्टन जो मटेरियल होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो मेल्ट हो जाता है, और इसके ऊपर क्या जो लिथोस्फेयर है वो होता है. तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशनिक प्लेट्स. ठीक है, तो लिथोस्फेयर कई सारी प्लेट्स हैं. वो प्लेट्स जो हैं इस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर घूमती रहती हैं. और जो हम बोलते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शंस हैं या जो मैग्मा है जो, वो भी इसी लेयर से निकलता है. ठीक है, what you should remember is that asthenosphere is the layer beneath lithosphere. लिथोस्फेयर के नीचे जो mantle की लेयर है, that is asthenosphere. In the asthenosphere the temperature is very high. Okay, and lithosphere moves on the asthenosphere. So you can say lithosphere rides on the asthenosphere. I told you the magma means the liquid or the molten material that comes out of the volcano, you can say. I have already studied that the earth crust is brittle. Brittle matlab toot jata hai. So the magma is in this layer and magma starts flowing from here and comes out of the earth's surface. Telling you this point is important. The upper portion of the mantle beneath the lithospheric mantle is called the asthenosphere. Asthenosphere meaning weak. This portion extends up to 400 kilometers and it is the main source of magma that comes to the surface during volcanic eruptions. Next point, the rocks that make up Earth's mantle are mostly silicates, a wide variety of compounds that share silicon and oxygen structure. Every layer there is different type of material. Okay, and we have already discussed when from the beginning what happened. The denser material, they move to the inside of the earth, okay, and less dense material was there at the top of the earth. Now in the mantle, heat and pressure increases with depth. So that means as you go down the mantle, and mantle is the biggest portion of the earth. If you go down the mantle, heat and pressure increases. तो जैसे जैसे आप मेंटल में, हमने बताया कि 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, सबसे बड़ा पोर्शन है अर्थ का. जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे मेंटल में, तो हीट भी, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा. द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मटेरियल इन द मेंटल हेल्प्स डिटरमाइन द लैंडस्केप ऑफ अर्थ. तो किस तरह से जो भी मटेरियल है मेंटल में या जो भी टेम्परेचर है वो किस तरह से अर्थ के लैंडस्केप को डिटरमिन करता है. कैसे डिटरमिन करता है? See, the activity in the mantle drives plate tectonics. So plate tectonics we will be studying. मैंने आपको बताया कि जो अर्थ का outermost part है वो plates की तरह है. Plates move करती हैं.
ठीक है, प्लेट्स एस्थेनोस्फेयर पे मूव करती है, तो हम पढ़ेंगे आगे जाके कि जब ये प्लेट्स टकराती हैं आपस में तब माउंटेन्स बनती हैं। द लिथोस्फेयर इट कंट्रीब्यूट्स टू वॉल्केनोज। वॉल्केनोज के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मैंने बताया, मैग्मा जो वॉल्केनो से जो लिक्विड मोल्टन मटेरियल निकलता है वो कहाँ होता है, मेंटल में, एस्थेनोस्फेयर में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स भी जो आते हैं उसमें भी इसका रोल है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। एंड ओरोगेनी, ओरोगेनी का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, तो माउंटेन बिल्डिंग अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि जब प्लेट्स टकराती हैं आपस में, व्हेन द प्लेट्स कोलाइड, ठीक है, या प्लेट्स में सबडक्शन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो अर्थ के ऊपर माउंटेन्स हैं या जो हिमालयाज हैं वो कैसे बनी, दैट ऑल्सो वी विल स्टडी. Many of the things that we see on the surface of earth are the result of some processes that are taking place in the mantle. A little detail about asthenosphere because it is an important layer. ठीक है, सो इट इज द सॉफ्ट लेयर, प्लास्टिक लेयर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है एस्थेनोस्फेयर में। सो बेसिकली जो भी मटेरियल है, ठीक है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। इट इज सो हॉट दैट इट बिहेव्स प्लास्टिकली एंड फ्लो. Lithosphere rides on asthenosphere. This also we have discussed that lithosphere is above asthenosphere. तो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर कौन है, कौन सी लेयर है, लिथोस्फेयर। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर इज द डेंसर वीकर लेयर बीनीथ द lithospheric mantle. तो point, it lies between 100 kilometers to 410 kilometers. The temperature and pressure of the asthenosphere are so high that rocks soften and partly melt, becoming semi-molten. So it is susceptible to slow convection currents. We know that heat is transferred. How heat is transferred? By three processes. Okay. So the three processes is conduction, convection, radiation. Okay. So all the materials, they are either in solid state or in the liquid state or in the gaseous state. So how heat is passed? Through conduction, convection and radiation. So we are talking about convection. Since the material is in molten state, so convection ka matlab how heat is transferred. So if we take for example that the lower part of the asthenosphere is, the temperature is high, will happen. So if this part of the mantle, it is hotter, you can say, if this part of the mantle is hotter and here somewhat this part is less hot as compared to the lower part, so heat is transferred from this portion to this portion. Okay, so how the heat is transferred? By convection. So with the help of the particles the heat is transferred. ठीक है, the slow movements in this zone may disturb the overlying lithosphere. ये भी मैंने बताया कि lithosphere जो है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर है। तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट होते हैं एस्थेनोस्फेयर में, जो मूवमेंट होते हैं कन्वेक्शन करंट की वजह से, वो इसके ऊपर जो लेयर है लिथोस्फेयर उसे भी डिस्टर्ब करते हैं and lead to tectonic movements like folding, faulting and general deformation of earth's surface. Now coming to the last layer of the earth, the innermost layer is known as core. The radius is about 3,500 kilometers. Okay. And I've already told you core is divided into two parts, inner core and outer core. So the radius of inner core is 1250 kilometers. Now temperature in the core is estimated to be varying between 3000 degrees and 6650 degrees. So you can imagine what is the temperature inside the earth. कितना ज़्यादा temperature है और इसीलिए हम earth में सिर्फ हम कुछ ही किलोमीटर्स तक जा पाए हैं. द प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू हीट इन द कोर, किसकी वजह से इतना ज्यादा टेम्परेचर है? इट इज द डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ओके, देन प्रेशर इज ऑल्सो वेरी हाई. प्रेशर इज एस्टिमेटेड टू बी 3 to 4 million times the atmospheric pressure है. So pressure also is high, temperature also is high. Now see, now there is a difference. If you can say this is core
and it is divided into, this is outer core, outer part of the core, and this is inner part of the core. Okay, so this is core, the last layer. Okay, so now what happens? The inner core, it is in solid state, and outer core is in the liquid state. Okay, now what is the reason outer core is in liquid state? Why? Because temperature dominates pressure. So if temperature dominates, that means it results in the melting of the rocks. Okay. And the material in the inner core is in solid state. Why? Because the reverse happens. Pressure dominates the टेम्परेचर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है और जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है. कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल, मोस्टली निकल एंड आयरन. Hence, it is also known as Nife layer. Nife is Ni for nickel, and iron is denoted by Fe. Another key element of the Earth's core is sulfur. Sulfur भी बहुत ज़्यादा है. In fact, 90% of the sulfur on Earth is found in the core. And the last point, it is 16% of the Earth's volume and 33.4% of the Earth's mass. Gutenberg discontinuity, it is the boundary between lower mantle and outer core. Okay, so if this is the Earth internal structure, this is supposingly mantle, this is core, and this is mantle. So this boundary between the lower mantle and the outer core, this is outer core, this is inner core. So this boundary between mantle and outer core is known as Gutenberg discontinuity. So one thing, that Earth is a natural magnet. Okay, so we have studied it in physics also, that if you suspend a magnet, it will always point in the north-south direction because Earth itself is a magnet. So the source of Earth's magnetism is the convectional currents that take place in the outer core. So outer core, I told you, it is in the liquid state. Liquid hai. Okay, because temperature dominates the pressure. So outer core, the material is in the liquid state. And again, convectional currents takes place. Which layer is responsible for Earth's magnetism? It is outer core. Okay. A bar magnet, when suspended freely, points in the north-south direction is due to Earth's giant magnetic field. The Earth magnetic field is supposed to save Earth from the solar wind, which might cause the ozone layer of the Earth to strip away. Now, it is a very important role of Earth's magnetic field that those rays of the sun, ठीक है, solar wind बोला जाता है, which is very devastating, ठीक है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो तो अगर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड वाज एब्सेंट अराउंड द अर्थ, so you must have heard कि in the atmosphere we have a ozone layer, and this ozone layer protects us from ultraviolet rays of the sun, harmful ultraviolet rays. And the role of Earth magnetic field is it saves the ozone layer in the atmosphere from the solar wind.